only a withdrawal of cash, check balance and change the PIN and get the mini statement and receive account updates. This is the basic services you can get from a simple basic unit of ATM. Then there is a complex unit which also provides a facility for a check deposit or a cash deposit and a line of credit and also a bill payment or a utility payment you want to do. If you have any question, please write it in your chat box. Okay. Moving on, we'll discuss what is a CIBIL score. The CIBIL score is a credit score. It's a minimum 3-digit number which indicates the individual credit history. Okay, the range for this CIBIL score ranges from 300 to 900, where the 300 is the lowest score and a 900 is the highest score. And then who provides this CIBIL score? There are various credit information bureaus. There are credit agencies which are authorized by RBI, and they are licensed to provide a CIBIL score of the individual or a firm. Then what is discussed in the CIBIL score or what is there in the CIBIL score? CIBIL score क्या करता है? It captures your repayment. Whatever the loan you have taken, whatever the credit card you have taken, all the information is captured in your CIBIL score. ठीक है, सिबिल स्कोर जो क्रेडिट एजेंसीज होती है, दे प्रोवाइड एंटायर रिपोर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें आपने जो भी लोन लिए होते हैं, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड अवेल किए होते हैं, सबके इंफॉर्मेशन उसमें होती है ना, हाउ यू आर डूइंग द रीपेमेंट ऑफ इट. ठीक है, उसमें मंथली अगर आपने किसी लोन में डिफॉल्ट किया है, उसमें वो भी कैप्चर होता है. अगर किसी लोन में आपने डिले पेमेंट किया है, इट इज ऑल्सो कैप्चर्ड इन योर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, देन देयर आर वेरियस बाइफर्केशन. अगर there's a score between 750 to 900 which is a very good score, and इससे क्या indicate होता है कि individual has a high credit worthiness. ठीक है, and bank are more likely to provide loan to those individuals. ठीक है, and their approval probability of loan is very high. Then there is a range of 700 to 749 which is a good, and probability of getting a loan is also good. Then there's a range from 650 to 699. Here, it's a satisfactory score. It's not very good. It's a normal score, and a possibility of getting a loan is likely possible. It depends on the other functionality of the individuals. Then there's a score between 600 to 649. It's a doubtful, so bank avoid giving loans in this range. ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल का सिविल स्कोर की रेंज 600 to 649 के बीच में होती है, तो बैंक आर लेस लाइकली टू प्रोवाइड लोन टू देम, क्योंकि उनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है. Then there is a electronic clearing system. As the name suggests, electronic clearing system क्या है? Is an electronic method for transfer of funds from one bank account to another bank account. ECS क्यों use होता है? ECS is mainly used for the when persons are likely to do a bulk transfer. ठीक है, जैसे किसी को कंपनीज को डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, देन कंपनी को सैलरी पे करनी है, पेंशन पे करनी है. इन दीज केसेस ECS सिस्टम इज यूज्ड. ठीक है, then there are two categories of ECS. One is a ECS credit, another one is a ECS debit. ECS credit में क्या होता है? When ECS credit allow for the multiple credit, like if a XYZ company wants to pay a dividend to a shareholder, ठीक है, then they can use a ECS credit because उनका जो debit account होगा, it will be a single account, और जो credit account होगा, it will be a multiple account. Then in this case, a company can use a ECS credit. Then there is another one is the ECS debit. ECS debit में क्या होता है? When there is a single we want to pay some repayment of a loan to some bank, then we will use a ECS debit, क्योंकि single debit है, single इसमें credit है. ठीक है, in that case we'll use a ECS debit. ठीक है, नॉर्मल अगर मैं EMI पेमेंट कर रही हूँ या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ या फिर टेलीफोन बिल कर रही हूँ, बिकॉज इट्स इंक्लूडेड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस. Then there's a concept of counterfeit currency. Counterfeit currency क्या होता है? It's a fake currency or the fake notes. These notes and coins are not issued by RBI, and it's a deliberate attempt to circulate notes and currency that is a copy of the real currency to cheat people. ठीक है,
and producing, circulating, and even using a counterfeit currency is illegal under the multiple provisions of the Indian Penal Code 1860. Any doubt in these four topics? Recording for the first class is also not available with me. I'll discuss with the admin. Then we'll share it with you or upload it on the site. We are now discussing a few topics left of Unit 2, which is banking services. Now we have completed all the topics of the Unit 2. Is ranges of civil score is clear to everyone? If anyone has a doubt related to these four topics or the Unit 1 or Unit 2, then we can discuss it now. Then if no one has any doubt, then we can move to our third unit. मैम आपका कैमरा ऑफ है? Yes, ma'am. ऑन कीजिए. Okay. Okay, we'll discuss a CIBIL score topic again. CIBIL score क्या होता है? CIBIL score is a 3-digit numeric number which ranges from 300 to. मैम कैमरा ऑन कीजिए, एक बार ऑन ऑफ करके ऑन कीजिए उसको. I have already done it. मैम it's not showing. Is it working now? No ma'am, only your screen is showing. The PPT is showing. Actually, ma'am, my team page is hanged and nothing is working on it. Should I disconnect and connect again?
मैम आप कैमरे भावना को, मैम, हाँ जी मैम, आप कैमरे को ऑन ऑफ कीजिए। आपकी स्क्रीन तो विजिबल है लेकिन आपका कैमरा नहीं नहीं, नियर कैमरा भी मैंने ऑन ऑफ करके देख लिया, बट जो टीम का जो पेज आता है ना, वो ही हैंग हो गया है, उसमें कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। मैम आपकी प्रेजेंटेशन भी आई थिंक रुक गई है। आई थिंक कैमरा ऑन करने के बाद समथिंग वेंट रॉन्ग। मुझसे वॉइस व्हाट वॉइस शुड आ आई डू? शुड आई लीव एंड देन जॉइन अगेन? कनेक्टिविटी। आप स्क्रीन को एक बार स्क्रॉल कीजिए मैम, आपका स्लाइड्स को? नहीं, अपना स्क्रीन जो आपने प्रेजेंटेशन किया हुआ उसको क्लिक कीजिए। हो रहा है? नहीं मैम, आपका सिस्टम हैंग हो गया आई थिंक। रुको, मैं लीव करती हूँ, देन आई जॉइन अगेन, ठीक है? ओके मैम। हेलो। हेलो हाँ जी मैम। मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम आप स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली मैम सब हैंग हो गया, आई एम नॉट एबल टू सी द टीम्स पेज। आर यू एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन? भावना मैम? मैम आपकी स्क्रीन पे सिबिल स्कोर पहले वाला जो आपका खुला हुआ था वही आ रहा है, आपकी वॉइस आ रही है बस, कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा आपका। स्क्रीन भी हैंग हो गई है, और आप मेरे को कॉल करोगे ऑन माय नंबर?
भावना मैम। हाँ जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। मैम नहीं आपकी चल रहा है कैमरा, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके मैम, यू कंटिन्यू। ओके। ओके। Am I audible to everyone? यस मैम। Okay, someone has asked to discuss civil score again. So, सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट न्यूमरिक नंबर होता है विच इज प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं विच आर ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई, दे प्रोवाइड दी स्कोर्स। और ये स्कोर किस बेसिस पे बनता है? दीज आर बेस्ड ऑन द रीपेमेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल। अगर किसी बंदे ने कहीं से लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, एंड हाउ ही इज रीपेइंग इट, ठीक है, उसने कोई अपने ईएमआई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ठीक है, वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ट्रैक करती है एंड दे उसको रेट करती हैं वो। तो उसको जब वो रेट करती है, दिस प्रोवाइड्स द सिबिल स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और उसके सिबिल स्कोर रेंज करता है फ्रॉम 300 टू 900। ठीक है, हाईएस्ट इज द 900। किसी का अगर 900 स्कोर होता है, दैट्स द मोस्ट एक्सीलेंट स्कोर वन कैन गेट। ठीक है, एनी डाउट इन सिबिल स्कोर? so we can move forward. Okay, someone has asked, is ECS different from NEFT and RTGS? देखो, ECS is mainly used for the bulk transactions. ठीक है, NEFT क्या होता है? NEFT and RTGS जो होता है, हम इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं। ठीक है, then continuing with the presentation, we'll start our unit 3. Our unit 3 is financial services from India Post Office. पोस्ट ऑफिस में देयर आर, सबको पोस्ट ऑफिस पता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारी सेविंग स्कीम्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट 9 डिफरेंट सेविंग स्कीम व्हिच आर ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हर किसी के अपने अपने टैक्स डिडक्शंस होते हैं, सब में अपने इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, so on what basis we can compare saving schemes of the post office? First is their eligibility, कि who all are eligible to apply for those schemes. ठीक है, this can be the age, gender and employment status of the individual. Then there is a difference of rate of interest in different schemes. ठीक है, एंड हर स्कीम में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हर स्कीम में कंपाउंडिंग अलग अलग तरीके से होगी, किसी में मंथली कंपाउंडिंग होगी, किसी में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी, किसी में एनुअल कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, और इसका डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ऑन द इंटरेस्ट इनकम यू आर गेटिंग फ्रॉम योर डिपॉजिट। ठीक है, देन देयर इज अ मेच्योरिटी, कि आपका डिपॉजिट कब मेच्योर होता है। देन हर सेविंग स्कीम का अपना अलग मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। देन लास्ट इज अ टैक्स ट्रीटमेंट, कि आपको आपकी सेविंग स्कीम से व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट सेविंग स्कीम। ठीक है, देन फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जैसे सिमिलरली हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो सकता है। ठीक है, कौन हु आर एलिजिबल टू ओपन दोज अकाउंट? कोई भी सिंगल इंडिविजुअल, जॉइंटली हम खोल सकते हैं, गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन अ बिहाफ ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सब ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। एंड व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस? 500 इज द मिनिमम बैलेंस। ठीक है, देन नॉमिनेशन, अब ये बैंक में भी कंपल्सरी है। इन एवरी सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यू आर ओपनिंग विद अ बैंक, नॉमिनेशन इज द मैंडेटरी फैसिलिटी, कि आपको whenever you are opening an account you have to nominate some individual to your account, so that in case of a death
कि आपका जो भी लमसम अमाउंट होगा, कोई भी अमाउंट आपके सेविंग में होगा, उस इंडिविजुअल को विदाउट एनी हैसल उस इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. That is the importance of nomination in the saving or deposits account. Then coming to the minimum balance, 500 is the minimum balance we need to maintain in your saving account. And if you are not maintaining a minimum balance, then 100 will be deducted at the end of the financial year as a maintenance fee. Same is explained in this slide. Further, you'll get a rate of interest of 4% per annum in your saving account of the post office. In this saving account, interest up to 10,000 in a financial year is exempted from tax. And if you are earning an interest above 10,000, then it will be taxable under the Income Tax Act. Other facilities which the post office saving account provides is a checkbook, ATM, internet banking, as similar to the saving account opened with any other bank. Then second one is the 5-year post office recurring deposit. We have already discussed what is a recurring deposit. Recurring deposit क्या होता है? When you are making a payment on a monthly basis or a regular intervals. ठीक है? These schemes are intended to encourage individuals to save regularly with a minimum deposit of ₹100 per month. ठीक है? आप per month 100 rupees deposit कर रहे हो. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इट्स अ 5-year पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट. तो कितने साल का होगा ये? 5 years का होगा. ठीक है, और डिपॉजिट कैन बी मेड फ्रॉम एटलीस्ट 6 installments to the 12 installments. Then the maturity period is 5 years and you can extend it for another 5 years. Then comes a post office time deposit account. These are similar to bank fixed deposit. We have already discussed a fixed deposit. Fixed deposit में क्या होता है? You make a deposit of lump sum amount for some pre-decided tenure. ठीक है? Who all can open this account? Individuals, single adults can open this account. The individuals jointly can open this account. Guardian on the behalf of minor can open this account, or a guardian on the behalf of unsound person can open this account. Currently, a post office is providing a different rates on a time deposit. For the 1-year time deposit, post office is providing a rate of interest of 6.9% per annum. For 2 years, it is providing a rate of interest of 7% per annum. For 3-year deposit, it is providing a rate of interest of 7.1% per annum. And for a 5-year deposit, it is providing a rate of interest of 7.5% per annum. Then other saving scheme of the post office are these. First is a national saving monthly income account. In this, you make a investment of a certain amount in a month. ठीक है, आपका इसमें इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होगा एंड आपका अमाउंट भी फिक्स होगा, बट यू आर सेविंग इन अ मंथ. ठीक है, दिस इज अ मंथली इनकम अकाउंट. ठीक है, यू विल सेव इन दिस अकाउंट ऑन अ मंथली बेसिस. Then there is a senior citizen saving scheme account. This scheme is available for an individual over the age of 60 years. Senior citizen के लिए saving scheme है, and this scheme matures after 5 years from the date of opening of the account, and this can be extended for the additional 3 years by the senior citizen. ठीक है, if you have any doubt till now, please we can discuss it now, then we'll move forward. Okay, Mayank, you have asked, are certain 10 rupee coins counterfeit which some people refuse to accept? There might be a case because we can't identify is it a counterfeit currency or not. Someone has asked how you can check on सिबिल स्कोर. देखो अभी तो बहुत सारी साइट्स जो है फ्री में सिबिल स्कोर निकाल के देती है, लाइक पैसाबाजार.com हो गया, बहुत सारी साइट पे अवेलेबल है फ्री में निकालने के लिए. इवन आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप पे, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, उसकी मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉग इन करोगे, उसमें भी वो आपका फ्री में सिबिल स्कोर काउंट करके देती है.
अदरवाइज ये पेड सर्विस है, आप किसी भी बैंक से जाके निकलवा सकते हो अपनी सिविल स्कोर। विल डिस्कस ऑल दी स्कीम्स इन डिटेल ऑल्सो, अभी तो ये हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस it is only for the postal services. Now they have diversified their operations and they are now into the banking services. They are providing all the services which are except loan. They are provided all the services which are provided by the normal banking sector. Manpreet, are you talking about the slide of post office time deposit account? Any other doubt, or we can move forward? Okay, we'll discuss other scheme now. So we have already discussed senior citizen savings scheme. Then other one is the PPF, is a public provident fund. Public provident fund क्या है? It's a long term investment scheme as declared by the government of India. ये government of India की scheme है and it is available with all other banks also. ठीक है, सबसे सेफ डिपॉजिट स्कीम है ये, एंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इन कंपैरिजन टू अदर सेविंग अकाउंट्स इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इट्स अ फिक्स्ड इनकम, इसमें भी ये भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, बट इसका टेन्योर इज द लिमिटेड। ठीक है, और मेन पर्पस क्या है? इज अ स्मॉल टू प्रमोट अ स्मॉल सेविंग अमंग द इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे सेव अ स्मॉल स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज अ किसान विकास पत्र, इज अ सर्टिफिकेट स्कीम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इट एक्चुअली डबल्स योर इन्वेस्टमेंट इन अ टेन्योर ऑफ 9 years or 9 years and 10 months. Then is a Sukanya Samriddhi scheme. It is for the girl child, for the betterment of the girl child, and it is also launched by the government of India. ठीक है, it helps an individual to build up capital for the education and the marriage expense of their girl child. ठीक है, then now we'll discuss these all these scheme in detail. What are the rate of interest in this scheme, what is the minimum investment required in this scheme, and what is the maximum investment you can do in these schemes, and who are eligible, and further the tax implications of these schemes. ठीक है, as we had first discussed, we have already discussed the post office saving account, post office recurring deposit account, and post office time deposit account in detail. Now we will start with the national saving monthly income account. Here the post office is provided rate of interest of 7.4% and per annum, which is payable on monthly basis. ठीक है, minimum investment what we can do is in monthly saving account is 1000 up to a 9 lakh for a single up to a 9 lakh for a single individual, and 15 lakh in the joint account. ठीक है, जिसमें कौन कौन एलिजिबल है? All individuals are eligible, even minors are eligible through a guardian. इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? It is taxable. Whatever you are earning in this account, it is taxable under a section 80C. इसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, it is taxable under the Income Tax Act. Then moving on, there is a senior citizen saving scheme. अभी हमने डिस्कस किया किसके लिए होता है? For the individual for above the age of 50 years, and for the individuals who are above the 50 years and below the 60 years but obtained a VRS or a superannuation. VRS क्या होता है? VRS is a voluntary retirement scheme. ठीक है, जिसने खुद से रिटायरमेंट अटेन ले लिया हो बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल किसी भी सर्विस से, वो इंडिविजुअल्स भी इसमें एलिजिबल है।
Any doubt? देखो, अगर यू आर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देन पीपीएफ इज अ कंपोनेंट ऑफ योर वन कंपोनेंट ऑफ सैलरी. अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो देन यू कैन खुद से आप अपना पीपीएफ और आप खुद से अपना पीपीएफ किसी भी बैंक के साथ, किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ खुलवा सकते हैं. देन यू कैन इंडिविजुअली डिपॉजिट योर अमाउंट इन इट. आपका पीपीएफ सैलरी का कंपोनेंट नहीं होता है. आपका एनपीएस होता है. एनपीएस इज अ नेशनल पेंशन स्कीम. और या फिर आपका जो पेंशन फंड होता था विच इज बिफोर 2009, वो आपका सैलरी का कंपोनेंट होता है. पीपीएफ में आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करती है. Mayank, has RD and TD used by people nowadays? Of course, it is used by the kids because आपको पता भी नहीं चलेगा. देन आपकी सेविंग भी हो जाएगी. जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है 31st एंड यू हैव अवेल्ड RD ऑफ ₹10,000. ठीक है, और आपकी सैलरी क्रेडिट हुई 50,000. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके 10,000 पर मंथ की सेविंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी जो भी टेन्योर आपने सेलेक्ट किया है तब तक. Of course, post office also provide ATMs. Then moving forward, we'll discuss the PPF account. PPF में आपको rate of interest मिलता है 7.1% का per annum and it is similar across all the banking institution or the post office. ठीक है, because it's a government scheme. And इसमें आपका rate of interest compound होता है on annual basis. Minimum investment which can be done in the PPF account is 500 and the maximum is the 1.5 lakh per year. ठीक है, who all are eligible? All individuals are eligible and a minor through a guardian are also eligible. अब इसमें क्या है, जितना भी आपका पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है इट्स एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, एंड फर्दर द इंटरेस्ट अर्न्ड इन अ पीपीएफ अकाउंट इज आल्सो अ टैक्स फ्री. Then there is a national savings certificate. Here you are earning a rate of interest of 7.7% per annum, which is compounded on an annual basis. However, it is payable on maturity only. Like in PPF, your interest is credited to your account on a annual basis. But in a national savings certificate, it is payable at maturity only. Okay, minimum investment we've been done in national savings certificates is 1,000 and maximum there is no limit. Further, you can avail a loan by pledging this national savings certificate to any financial institution. Who all are eligible? All individuals are eligible and a minor through a guardian are also eligible. Okay, deposit qualify for the exemption under 80C and these national savings certificate matures after the completion of 5 years from the date of deposit. ठीक है, नेक्स्ट इज किसान विकास पत्र. इट्स another saving scheme of post office. इसमें क्या है, you earn a rate of interest of 7.5% per annum, which is compounded on annual basis. Minimum amount you can deposit it was 1,000 and there is no limit on the maximum amount. Who all are eligible? Individuals and minor also. Here interest is taxed and the amount received on maturity is tax free. Further, your amount doubles in 115 months. That is a period of 9 years and 7 months or a period as prescribed by the Ministry of Finance. ठीक है, इसका जो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है. बट नाउ एट दिस टाइम इट इज 9 years and 7 months एंड इसमें आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है. Then is a Sukanya Samriddhi account. Here it is for the girl child.
इसमें आप कितना पर इंटरेस्ट मिलता है, यू विल अर्न अ इंटरेस्ट ऑफ 8.2% per annum, which is compounded on annual basis. Minimum investment which can be done is 250 and a maximum is a 1.5 lakh per annum. Further, it is deposit in this account is also eligible for deduction under section 80C of the income tax act. ठीक है, अब कौन एलिजिबल है? गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 years इज एलिजिबल and should be opened by in the name of the girl child by the guardian. ठीक है, अब ये क्लोज कब होगा? Close after when a girl child attains the age of 21 years from the date of if a girl child attains the age of 21 years, this can be closed, or at the time of her marriage it can be closed. ठीक है, any doubt till now? If anyone has any doubt, please post it in your comment box. Yes, Kisan Vikas Path can be purchased by anyone. I think the scheme is with other bank, but not with the post office. Any doubt, anyone? We don't buy shares of post office. We are discussing a saving scheme which are offered by the post office. Okay, NSC is a national saving certificate. ठीक है, कितने ईयर का होता है? इस मेच्योरिटी इसकी 5 years की होती है. It's a tax saving scheme. टैक्स सेविंग स्कीम होती है. ठीक है, इसमें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? वो 7.7% पर एनम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, विच इज कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल एट द मेच्योरिटी. हु आर एलिजिबल? कोई भी इंडिविजुअल एलिजिबल है इसमें. एज अ जॉइंट अकाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, और माइनर हु इज अबव द एज ऑफ 10 years खुद अपने नेम पे ही इस पे इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 की होती है एंड ऑन अ मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. ठीक है, फर्दर इसमें जो भी आपका डिपॉजिट है इट क्वालिफाइज फॉर द टैक्स एग्जम्पशन अंडर 80C. फर्दर अब जो भी NSC सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अगेंस्ट बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है.
ठीक है, जैसे आप बैंक से गोल्ड लोन लेते हो तो उसमें क्या करते हो, बैंक को गोल्ड देते हैं, देन विल अवेल लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो एनएससी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो कि आप एनएससी बैंक को दोगे, बैंक उस पर प्लेज का चार्ज क्रिएट करेगी एंड उसके अगेंस्ट उसके अमाउंट का जितना भी होगा उसका 75% या 90% बैंक आपको लोन भी दे देगी। एनी डाउट? Okay, moving forward, we'll discuss the various current interested on these various schemes. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट डिस्कस किया था, विच इज सिमिलर टू द अदर बैंक अकाउंट्स। अदर बैंक में जो भी हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं वैसा ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है। करंटली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है पोस्ट ऑफिस, 4%, विच इज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एनुअल, विच है एनुअल कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन हमने टाइम डिपॉजिट डिस्कस किया था। अब टाइम डिपॉजिट के टेन्योर, अलग अलग टेन्योर के टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो फर्स्ट इज 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, जिसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6.9%, विच विद द क्वार्टरली कंपाउंडिंग। सेकेंड इज अ सेकेंड ईयर 2 ईयर टाइम डिपॉजिट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, विच इज ऑल्सो कंपाउंडेड क्वार्टरली। देन देर इज अ 3 ईयर टाइम डिपॉजिट, जिसमें पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज ऑल्सो कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। Then there is a 5 year time deposit, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था रिकरिंग डिपॉजिट, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.7%, विच इज ऑल्सो कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। देन देर इज अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें हमने डिस्कस किया था इट इज फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द सीनियर सिटीजन and who are above the age of 60 years and or 50 years, or or the individual who is 50 years and who is within the range of 50 to 60 years but obtained for the voluntary retirement or the superannuation। ठीक है, इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड ऑल्सो पेड। ठीक है, देन देयर इज अ मंथली इनकम अकाउंट, जिसमें आप मंथली बेसिस पे सेविंग करते हो। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% का, विच इज ऑल्सो मंथली कंपाउंडेड एंड पेड। what you mean by the paid, that is it is credited in your account। then is a national saving certificate, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.7% का, विच इज ऑल्सो कंपाउंडेड ऑन एनुअल बेसिस। Then there is a public provident fund scheme, which has a rate of interest of 7.1%, which is also compounded on annual basis. Then there is a Kisan Vikas Patra, which matures in 9 years and 7 months, have a rate of interest of 7.5%, also compounded on annual basis. Then there's a Mahila Samman Saving Certificates. This is a new scheme launched by the government of India for the women. Here, post office provide the rate of interest of 7.5%. Which in this also the rate of your amount is your interest is compounded on quarterly basis. Then last one is a Sukanya Samriddhi account for the girl child. Here rate of interest is 8.2%, which is also compounding on annual basis. We have completed your unit 3 for this subject. If you have any doubt, please post it in your chat box. Or you have any doubt related to the unit 1 and unit 2, we can also discuss it here.
Any doubt, anyone? So Mayank has asked, why there are so many different schemes. देखो, it depends on the individual need. किसको किस में सेव करना है, like किसी को रिकरिंग डिपॉजिट में सेव करना है, किसी को टर्म डिपॉजिट में सेव करना है. That's why they have provided a different scheme. Obviously, it is from a different benefit you are getting. ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि को you can compare it with the senior citizen saving scheme. ठीक है, तो according to the needs of the individual, different schemes are formed. Mayank has asked, can private bank fail? देखो, फेल होना इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्किंग कल्चर. ठीक है, प्राइवेट हम ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते. बहुत सारी कंपनी भी फेल हो जाती है, बहुत सारे बैंक भी फेल हो जाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर वर्किंग. ठीक है, how much risk they are taking and how much capacity or the capital they have to absorb those risks. ठीक है, तो I can't answer this question कि कौन सा प्राइवेट बैंक फेल हो सकते हैं, नहीं हो सकते. तो इट डिपेंड्स. देखो, दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं. देखो, मोस्टली जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो बैंकिंग सर्विसेज की तरह ही काम कर रही हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स विच आर पोस्ट ऑफिस इज प्रोवाइडिंग इज ऑल आर गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, तो यू कैन कंपेयर विच इज बेटर, पोस्ट ऑफिस और द बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में यू कैन गेट अ बेनिफिट ऑफ द एडवांसेस और द लोन्स, जो आपको पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगा. Akansha, you are asking ECS, or should I explain again what is ECS? अभी तक देखो, अभी तक वी हैव डिस्कस यूनिट 3, वी हैव नॉट काउंटेड एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन. विल सी अगर यूनिट 4 एंड 5 में न्यूमेरिकल आएगा, देन इट कैन कम इन योर एग्जाम. देखो, ईसीएस क्या है? ईसीएस सिंपल सी चीज है. ईसीएस फंड ट्रांसफर की स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसमें आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं. यू आर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट. जैसे हम एनईएफटी में करते हैं, आरटीजीएस में करते हैं. दोज आर ऑल्सो अ फंड ट्रांसफर की हमारी स्कीम स्ट्रैटेजीज है कि कैसे हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, अब ईसीएस में क्या है? ईसीएस इज जनरली यूज फॉर द बल्क ट्रांसफर, जब हमें बल्क ट्रांजैक्शन करनी होती है. एनईएफटी में क्या है? वी आर मेकिंग अ सिंगल एनईएफटी, सिंगल हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी आर डूइंग अ बल्क ट्रांसफर लाइक अ डिविडेंड, जैसे अगर किसी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, तो अब शेयर होल्डर्स 100 ऐसे तो नहीं होंगे ना, 10 भी शेयर होल्डर्स हो गए. ठीक है, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन बी इन लैक्स. ठीक है, तो जब इस टाइप का बल्क ट्रांसफर करना होता है, देन विल यूज अ ईसीएस सिस्टम. ठीक है, अब ईसीएस क्या है? ईसीएस में दो टाइप का होता है, ईसीएस क्रेडिट एंड ईसीएस डेबिट. ईसीएस क्रेडिट में क्या है? व्हेन यू आर अलाउइंग टू क्रेडिट लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बाय डेबिटिंग अ सिंगल अकाउंट. हम एक सिंगल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों को पे कर रहे हैं. देन देयर इज अ ईसीएस डेबिट, जब हम सिंगल अकाउंट से डेबिट करके सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हैं. लाइक अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया है,
ठीक है, तो उसमें मैं कैसे पे करूंगी कि मेरे अकाउंट से डेबिट हो एंड जो भी अदर बैंक है उसमें क्रेडिट हो जाए, देन दिस विल बी अ ईसीएस डेबिट. This is mainly used for the EMI payments or the payment of electricity bill or the telephone bills. But whatever is there in the PPT, it's already there in your SLM. Okay, then it's better you read it from there. PPT is just for the presentation and make it concise so that you can understand it better. And regarding the first class recording, I also don't have it. I asked the IT person to circulate with you. इंटरेस्ट रेट जैसे पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट है, इट इज अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ द पोस्ट ऑफिस. और अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट यू कैन एबल टू फाइंड इट, देन यू कैन मेल इट टू मी, देन आई शेयर इट विद यू. किसी भी टॉपिक को लेके, एनी टॉपिक यू हैव एनी अदर डाउट, यू कैन मेल इट टू मी. Any doubt, anyone, or we can end this class? Two classes are left. In next two classes